Bismillahirrahmanirrahim. May I have your attention, please? So we are starting the session on bleb management, basically. It's the dream of every ophthalmologist to see a functioning bleb, and trabeculectomy success depends on that. In yesterday's lecture, we have discussed how to form a bleb, and now today we'll discuss what is the post-op management of a bleb, if you see it failing or what care should be taken. Our main focus should be on management of things like needling of bleb, suturitis, and then there will be talk on releasable sutures by Dr. Rashid as well. So I'll request the session co-chair, Mr. Zishan Chima, to please come on the stage, and chair, Mr. Shafi Jotawi. I request the first speaker, Professor P.S. Mehar, President, Pakistan Glaucoma Association and consultant at AICO University, to give us talk on needling and revision of bleb, please. Thank you, Sadia. So when we do the trabeculectomy, it increases the success rate with the use of anti-metabolite. However, the failure rate still unfortunately stays between 20 to 50%, depending upon different series that you're looking at. And apiciclar cicatrization over the fistula is the primary reason for long-term failure. These are the things that we discussed yesterday. So when you have a failed trab with no filtration bleb and raised intraocular pressure, what shall we do? We can go for the addition of medical therapy. We can revise the existing bleb. You can repeat the trabeculectomy. You can put drainage implants, or then in the end, unfortunately, if nothing works, you can think about cyclorestrictive procedures. So needling, little bit history, first described by Mardelli 1996. Then with the various workers who have published their work on this. Idea is to increase the surface area for filtration. So this is a procedure that you can do at the slit lamp, or you can use under the operating microscope in OR. And the technique involves external revision, and some people have even advised internal revision via anterior chamber, and you can do the procedure with or without anti-fibrotic agents. So this is the needling that majority of the time I do it on slit lamp because it's easy and quick. Another reason is that carrying patient to OR costs money. A lot of patients that already paid amount of money to the hospital is difficult to ask for increased finances. So maybe a necessity. So what these procedures are done on slit lamp or in OR. Conjunctiva is anesthetized with multiple drops of alkane, and then we put a drop of iodine 5%. And then 0.1 mil of 2% lignocaine with a 0.1 mil of mitomycin C in concentration of 0.2 milligram is drawn into tuberculin syringe with 27 gauge needle, and this is given subconjunctivally in the superior fornix above the bleb. And when this is done, we distribute with any blunt spatula or cotton applicator, and we'll leave it for about 10 minutes. So eye massage, you can see it done over the where you're given the medicine. And then patient is positioned on the slit lamp with the speculum placed. The syringe with 27 needle is introduced under conj as far away as possible and advanced to the ischial flap with slow motion all addition between conjunctiva and episclera are separated. Needle is further introduced under the flap, and with side motion episcleral additions are broken down. The needle is advanced through the internal ostium in the anterior chamber in pseudophakic eyes. Once the bleb is formed, needle is gently withdrawn, and when we're doing in the OR, I normally use the MUR 18 gauge needle, which I am going to show you. So this is the so we have drawn this 0.1 mil of 2% lignocaine with adaline because it is blanched the conjunctiva, and it makes your life easy to see it. The patient is done under topical, and it has a 0.1 mil of mitomycin C. You give it in the superior fornix as far away as you can. And then you distribute it. There's a cotton applicator I got in my hand.
and this is a topical anesthesia being poured over the eye. हम मरीज को लिटा देते हैं और आई को सब कुछ करके ना ये सब कुछ कर रहे हैं, and then we leave the patient for 10 minutes. 10 मिनट patient वहाँ रहता है. The patient is already lying down comfortably. तो ये वीडियो जो है हमने 2 पोर्शन में किया है, and then we have put these 2 portions together. अगर आप देखेंगे, this totally, you can see the flat blab, and you can see the मैं उसको मार्कर लगा के उसको थोड़ी सी हल्की सी आउटलाइन अपने लिए बनाता हूँ to make my life easy, क्योंकि आपने ये ड्रग इंजेक्ट किया ना तो समटाइम कंजक्टिवा बलून्स अप और आपको जो मार्क्स हैं वो नज़र नहीं आते. तो that's where the surgery has been done. That's the MER blade. You can use the needle, but I find that it's easy for me because it's got cutting edges on the either side, and this goes under your flap, under the scleral area, and और आप देखिएगा, you'll see, आप देखें bleb बन रहा है because the aqueous was entrapped there. वो सारी जो है ये नजर आ रहा था. तो जैसे आपने किया, हमने उस नीडल को बात कर दिया, वी जस्ट अप्लाई द प्रेशर ओवर द एंट्री एंड, और उसमें मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन वी पुट टेनोनाइलॉन सूचर और उसको इन्वर्ट कर देते हैं कि वो पेशेंट जो है फील न करे, और वो टेनोनाइलॉन का सूचर जो है आप आराम से 1 हफ्ते के बाद निकाल देते हैं. पेशेंट को एंटीबायोटिक पे डाल देते हैं फॉर अबाउट वीक्स टाइम, and then with some steroid drops, preferably I use Mexidex, which is 0.1% dexamethasone, and 4 times a day, and we use it for another 4 weeks to 6 weeks, depending upon the amount of vascularization that you see over that particular site, So we check the IOP post-operatively, topical antibiotic, topical steroid, and then we see the patient week, month, and 3 months time. So successful outcome is defined as IOP between 6 to 20 millimeters of mercury without any anti-glaucoma medicine. Complication, you can have subconjunctival hemorrhage in all patients at the point of entry of the needle. Hypotony, yes, we did a series in which 2 of our eyes went into hypotony, pressure drop less than 6 millimeters of mercury, and then there's a transient hyphema, and which is transient in nature, it disappears within the next few days. Some complications which are reported in the literature is the choroidal effusion with kissing choroid, and even you can cause suprachoroidal hemorrhages. So risk factors for failure are pseudophakics, needle revision carried out within 1 month of TRAB, and female gender. I don't know about the gender, but definitely pseudophakics are a difficult class of people, because even the chance of failure of TRAB is higher in these patients. And there are other risk factors reported in literature, pseudophakia, TRAB without antimetabolites, or the needling done within 2 weeks of surgery. So that was our paper long time ago published, and this is what it says, that 26 patients out of 46 patients showed improvement in IOP of less than 20 mmHg, achieving success at 57%. So आपको अगर 50-55% or 60% success rate मिलता है, at least you save the patient from going under the repeat surgery. So what are the risk factors for bleb failure? Chronic use of anti-glaucoma drops, especially with preservatives, which already been discussed and emphasized and re-emphasized by Dr. Rashid Zia, because they prime the conjunctiva antinon capsule of fibroblast, neovascular glaucomas, uveitic glaucomas, the phakics, any surgery involving superior conjunctiva, younger patients, and then patients who have got pre-existing ocular surface disease, ocular rosacea, or old trachoma. So when we don't do needling, failure of filtration secondary to episcleral fibrosis, failure due to localization of the bleb, eye encapsulation, and bleb dysesthesia. So these are the 4 conditions where we prefer to do this procedure. And the ideal bleb is diffuse, lobular appearance, contain microcyst. Various classification of bleb morphology are in literature. Moorfield's, Wurzburg, and Indiana bleb grading system, which I normally use. You have to look at the height of the bleb, horizontal extent, vascularity, and also leakage, and you want to see putting fluorescein if there is any serial positive.
And these are signs of bleb failure: excessive vascularization, absence of microcyst, and increase in the intraocular pressure. So these are some steps which we discussed yesterday again, that if you want to achieve ideal bleb, what you should do. Preoperatively, modification of anti-glaucoma drops, addition of oral carbonic anhydrase inhibitors, and fluorometholone drops for 2 to 3 weeks. Intraoperatively, avoid superior rectus brittle suture, gentle conjunctiva handling, avoiding buttonholes, and careful scleral flap and conjunctival suturing. And post-operatively, medical man-made antibiotics, which we averagely use for about 3 to 4 weeks. And then steroid, averagely I will use it for about 3 months, but you also heard Dr. Rashid saying that if you think that there's a vascularization of the bleb, you can even extend it to 6 months, So aap dekhen, because huge blood vessels sitting on the conjunctiva superiorly on your bleb side, you know that there's trouble. Early phase, we do the massage to adjust your thing, and then there are adjustable and releasable suture, which you are going to get demo today, and that's the needle. So needling of the drainage bleb with MMC can revive the failed filtration procedure in less half of the cases, avoiding more invasive repeat surgery for commencing patient again on expensive medical treatment. Thank you very much. So Professor Imtiaz Ali is going to show you the suture lysis, and it's a small video, and that's you see, that's the reason I did not mention it, and then we invite Rashid Ajay. So our next speaker is Professor Imtiaz Ali. He doesn't need an introduction. He's the pioneer of Pakistan Glaucoma Association. And before Professor Imtiaz starts, let me remind the audience that we are going to have a dry lab session afterwards, so please stay with us. And call your colleagues who want to learn releasable sutures and scleral flap dissection. Professor Imtiaz, please. Bismillahirrahmanirrahim. So once you've done a trabeculectomy, the story starts. It doesn't end there. We've seen since morning. So you have perioperative problems from the very beginning. You can have hypotony, you can have elevated IOP after the surgery, and then in hypotony you can have a flat anterior chamber, you can have a deep anterior chamber, and in elevated IOP you can have a flat anterior chamber and a deep. So you have to make a differentiation that what's going wrong. You have to examine the fundus, you have to examine the surgery as a whole. So when do you require a suture lysis? Indications, timings, procedure, effectiveness, and outcome and related complications. It's a very simple procedure that if you want to do it, indication is that the intraocular pressure has gone above 22 millimeters of mercury after 48 hours in spite of the ocular massage that you have done. The deep and quiet anterior chamber, no bleb formation, patent internal ostium if you have done a gonioscopy. Then post-operative increase in IOP. Suture lysis not advised during the first week, you should avoid it. Can be performed till 2 to 3 months, but you can do it preferably in the second week. And the common complications again will be hypotony, and do not perform after 3 months maybe. So again, how do we do it? People use different kind of lenses, but I have used a blue menthol lens which works in my hand. Our old friend Dr. Nakash, Professor Nakash, who died, he bought this lens and then I used it, borrowing it from him, and it has got certain qualities that suit me. So suture magnification you should do properly, and suture appearance 2 to 3 fold, you should be able to see whatever you want to do. And this tip of this lens is pointed, and the pointed tip provides increases the visibility of the suture, adds to stabilization of the treated area. This feature provides particular benefit in patients with thick Tenon's layer or a subconjunctival hemorrhage.
These are the settings that you use: 50 micron, spot size, duration 0.1 second. You can vary it, you can increase it to 100 milliwatts according to your need, and you put a topical anesthetic drop, a drop of phenylephrine, which gives you some the blood, the pink eye disappears with phenylephrine because of vasoconstriction. This, however, is usually not necessary with this lens, since the compression provided by the tip of the lens will bleach the tissues in the area of the suture lysis. Ask the patient to steady her gaze or his gaze on a down object below. Place the lens in a way that the suture you wish to bisect should be centered on the protruding lens tip. This is easily accomplished while looking through the lens. The fish mouthing of the wound can happen after suture lysis done. The special design of the lens tip can be further utilized to compress around just posterior to the area of the flap in order to encourage filtration through the suture lysis portion of the flap. This pressure will fish mouth the flap from its underlying bed. As fluid infiltrates out of the eye, the conjunctiva will be seen inflating around the lens there and then. This is how this lens looks like. And these are the parameters that I mentioned: 50 micron, 100 to 500 power, 0.1 to 0.2 seconds. You can focus it there, and there it breaks. And if it's a crisscross suture, you can hit the center. This lens gives you magnification as well there. And you can see the suture very easily. And there you can hit the center, and all four pieces will go apart. So suture lysis is a safe and effective method of promoting filtration following any procedure of trabeculectomy. Thank you. Thank you very much, Professor Imtiaz. Our next speaker is Dr. Rashid Zia. He will be speaking on bleb management, especially releasable sutures. Dr. Rashid Zia is a consultant complex glaucoma surgeries at East Kent Hospital and is a very active member of British Wax and Ophthalmic Society. And it won't be incorrect to say that Dr. Rashid Zia has helped us change glaucoma guidelines and management in Pakistan. Thank you very much. Assalamu alaikum. So this instructional course is designed to teach releasable sutures and suture lysis. Suture lysis का आपने देख लिया कि you need a lens, is fairly easy, you can do it on slit lamp. तो only जो limiting factor है suture lysis में वो है कि आपके पास laser machine है कि नहीं है. तो कई दफ़ा ये होता है कि जब trabeculectomy आपने की है, then time is of an essence. So you want to do suture lysis or you want to remove the sutures at the right time. अगर आपने पहले कर दिया आप hypotony कर लेंगे, अगर आपने देर से किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो इसलिए ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे लेज़र अवेलेबल नहीं है, तो जो रिलीजेबल सूचर्स हैं ये बहुत यूज़फुल हैं. और यूके में जो 100% प्रैक्टिस है वो रिलीजेबल सूचर्स की है. तो उसकी एक और वजह भी कि हम सब सोचते हैं वहाँ पे अब पेशेंट को लेकर लेज़र मशीन पे डालना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन सूचर लाइसिस और रिलीजेबल सूचर आर इक्वली इफेक्टिव टेक्निक्स. जोन सा आपके हाथ में और आपकी इकोनॉमिक्स को एंड यो लॉजिस्टिक्स को सूट करे, आप वो चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं. तो आई विल ओनली शो 2 or 3 वीडियोज़.
and they will only concentrate कि हमने releasable suture किस तरह करना है. There are many different ways, but we will stick to one. ये वो टेक्निक है जो आप पहले आप यहाँ देखेंगे. इसके बाद इन माइक्रोस्कोप्स के ऊपर डॉक्टर सादिया, डॉक्टर महमूद अली और डॉक्टर तैयबा एंड नौरीन आपको दिखाएंगी. Aisha Shakil be there, so there are many mentors here who can teach you how to put the releasable suture. जब आप एक दफ़ा releasable suture models के ऊपर कर लेंगे, then you can come back here with myself and Mehar साहब and Aisha, so that we can talk other जो daily टोटके हैं. releasable suture तो लगा लिए हैं, लेकिन वो उनको काम किस तरह कराना आगे, वो छोटी मोटी बातें वो हम उस वक्त करेंगे. तो तो आपने नज़र नहीं आ रही भाई, इधर कुछ और चल रहा है, उधर कुछ और चल रहा है. स्लाइड शो पे ये तो नहीं, ये नहीं, ये ली दूसरी. प्रेजेंटर व्यू पे वो नहीं चलेगी सर. प्रेजेंटर व्यू पे वो नहीं चलेगा, वो लिंक है ना उसका, वो ट्रैक उधर से रन कर देते हैं जो अपनी वीडियो दिखानी फोल्डर में. आप इसको बंद कर दें, इसको चलाइए. ये हाइपर लिंक हुई है ना इसके साथ. लिंक के थ्रू सर नहीं, प्रेजेंटर व्यू पे नहीं चलती. पहले बताते हैं अब क्या करना है. एक और काम कर लेते हैं सर. डुप्लीकेट कर लेते हैं. मेरा लैपटॉप इसके साथ लग जाएगा इसमें. चलें, ये एक और अच्छा आप इसमें यू कैन सी कि यू कैन स्टार्ट. ये आपने फ्लैप बनाया हुआ है, तो फ्लैप की साइड से फ्रॉम हियर थ्रू क्लियर स्क्लेरा यू पास द नीडल एंड टेक इट आउट फ्रॉम द कॉर्निया. तो यू कैन ऑल्सो मेक अ स्लिट इन द कॉर्निया ताकि ये बाद में बेरिड रहे. अगर आप बेरिड नहीं करते, इट स्टेज ऑन द कॉर्निया, तो इट डजंट रियली इरिटेट मच. उसके बाद आप वापस यू पास इट थ्रू हियर एंड देन यू टेक इट आउट थ्रू द फ्लैप्स. जो स्क्लेरल फ्लैप बनाया उसकी एंटीरियर मार्जिन से के पास से आप लेके आए. सो यू कैन सी दिस लूप. कहने आपको ये लूप नजर आना शुरू हो गया. ये दिस इज द लूप दैट यू विल रिमूव, विल पुल ऑन स्लिट लैम्प लेटर ऑन इफ यू वांट टू रिलीज इट. इसके बाद यू टेक अ फुल थिकनेस बाइट एट द एंगल. And it's very important that you take a larger bite, क्योंकि this is the resistance that you want to offer. If you make a smaller bite, आप इतनी resistance नहीं offer कर सकते. And जितनी equidistance, जितना वहाँ से लिया उतना ही यहाँ से लिया. इसके बाद आपने simple 4 throws करने. जैसे आप 2 थ्रो करते हैं सूचर बांधने के लिए, you need to do 4. तो ये देखें 1 2 3 4, और उसके बाद जो यहाँ पे आपका लूप बना था उसको खींच लें and it will become like this. ठीक है, इसके बाद आप ट्रिम कर दें. ये जो छोटा सा लूप बाहर आ जाता है, this will remain so that you can pull this. आपने स्लिट लैम्प के ऊपर इसको निकाला, खींचेंगे तो ये सूचर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा तस्मे की तरह. This is what we will discuss later, that what is the right amount of strength you need to put. The right amount of strength के 2 schools हैं. अगर आप मोर फील्ड की तरफ चले जाएंगे, they want 0 flow, and then only if you press on the here, then there should be a little bit of burp of fluid. That is more field के ख्याल से ये बेस्ट है. इस तरह करेंगे तो नेक्स्ट डे आपका प्रेशर जो है तकरीबन mid-20s में होगा. दिस इज व्हाट यू वांट. यू डोंट वांट हाइपोटनी इन 0.95 और 1.0 डिस्क जहाँ पे सिर्फ टेम्पोरल डिस्क है, उसमें यू डोंट वांट हाइपोटनी. तो strength of sutures is very very important. You want to tighten it but not too tight
and not too loose. So more field कहती है कि बस इतना tight करें कि जब आप हल्का सा भी यहाँ से press करें तो little bit of egress of fluid हो. Whereas if you go to Manchester, Birmingham side जहाँ से नूरबख्श train हुई हैं और my mentor too, so they will tighten it and then they will sit and see कि थोड़ा बहुत ये जो है ना यहाँ पे it starts to get wet. There should be no flow. ऐसे there should no flow, free flow, लेकिन after a few seconds it starts to get wet here. पूरे दिन में it's 2 microliters जो produce कर रही है, you don't want a whole drop to come out of the eye. It will cause hypotony. So you just want little bit of जिसे कहते हैं नमी, वो अगर आपको नजर आनी शुरू होती है, that is the right amount. इस तरह करेंगे तो next day is very likely you are going to be around 10 anyway. Even if you are less than 10, you will still have a formed chamber and you are unlikely to have choroidal effusions. That's another different science which we will discuss later. Would you do a potential change, you rush the PSS through the Yes, yes. or only putting fluorescein? No, we do. So usually what my habit, में दूसरी video नहीं चल रही, which I really want to play. This is the backup video. तो जो high risk patients हैं, जैसे high myop है, उसमें I always put AC maintainer and we calibrate it to 10 millimeters of mercury. So उसमें हमें पता होता है कि भाई 10 millimeter पे fluid निकल रहा है कि नहीं निकल रहा. तो जो non high risk हैं उसमें मैं AC maintainer नहीं डालता, मुझे I find it very fiddly. तो उसमें ये होता है कि भाई you place the sutures first and then you go into the AC. तो इस possibly let's play if this again. So this is, you can see the previous photograph, there was an air bubble. इसमें air bubble नहीं है, ठीक है? तो क्योंकि अगर if you go into AC and then try to put releasable sutures is very difficult. So people used to make sclerostomy, PI, and then put releasable sutures. That becomes very difficult because AC is already collapsed. It's a softer eye. So you always pre-place them. We call them pre-placed. तो अभी अब हम AC में enter नहीं हुए और हमने releasable suture यहाँ से निकल गई, फिर वापस आई, coming through the anterior lip of the scleral flap, and then you take a big bite here and 4 throws. Similar repetition on that side. तो जब ये हो जाएगा, अब आपने जो दूसरा सूचर लगाना है, वो इतना डिस्टेंस वो रखिएगा कि जब यहाँ से आपने ब्लेड डालना वो सूचर ही ना काट दे, ठीक है? अगर मेरी बाकी वीडियोस नहीं चली तो इसका मतलब वो भी नहीं चलेगी. तो ये देखें जो इसका डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस है, ये तो मैं अब फाइनल कर रहा हूँ ना, ये तो आई एम जस्ट टाइंग आफ्टर 4 throws एंड यू कैन सी इट्स फेयरली टाइट. सो जब मैं फ्लोरेसिन भी डालूंगा देयर इज हार्डली एनी फ्लूइड कमिंग. अगर मैं बैठ के 2-3 मिनट इंतजार करूंगा तो वो नम होना शुरू हो जाएगा. दैट इज जस्ट द राइट प्रेशर. और यू डोंट वांट लो प्रेशर्स ऑन द फर्स्ट डे. यू वांट 20s, mid-20s में प्रेशर है एंड देन यू टाइट्रेट इट डाउन. इनिशियली आप हमेशा मसाज करते हैं, you never release suture. If you release suture in the first week, it's very likely you will end up into trouble. So first week में जगह प्रेशर ऊपर जा रहा है, you just do massage. उसके बाद आप पेशेंट को कहें भाई बैठो, जब क्लिनिक खत्म होगा ना फिर आना दोबारा. उस वक्त दोबारा आप चेक करें, अगर प्रेशर दोबारा जा रहा है दोबारा मसाज कर दें. सूचर ना निकालें. सूचर आपने निकालना है तो आप तकरीबन 2 हफ्ते के बाद निकालें. तो लेकिन जो इस सूचर में और इस सूचर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपका इतना होना चाहिए कि आपकी कैराटोन नाइफ वहाँ से गुजर जाए, वरना तो ये कट सकता है. और अगर डिस्टेंस कम है तो यू कैन यूज अ थिनर ब्लेड. बट व्हाई डू आई सजेस्ट कैराटोन? वो इसलिए, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जब आपने कर लिया, इतनी मेहनत की है, इसके बाद आपने क्लोज कैसे करना है. अगर आपकी कॉन्जंक्टिवा फ्लैप से लीक हो रहा है तो दैट मीन्स योर ट्रैवल फेल. अ लीक ब्लेब विल लीड टू ऑलमोस्ट 100% चांस ऑफ ब्लेब फेलियर लेटर सूनर. और जब भी आपने क्लोज करना है यू नीड टू क्लोज इन 2 layers. आप 2 layers में या 1 layer में करें. मकसद ये है कि आपने टीनॉन को वापस ला के उसकी एनाटोमिकल पोजिशन पर सूचर करना है. डू नॉट अलाउ द टीनॉन टू फॉल बैक. डू नॉट कट द टीनॉन. तो अब ये देखें, इमरान मसूद कर रहा है जो हम सब का मेंटोर है. So the way he took was, let me start again.
So what he did, कि उसने reverse mounted needle है, he goes through here, come out through the sclera, and then he took conjunctiva. लेकिन इसके साथ आप ये देखें कि he will also attempt to take the tenons with it. और ये पहले ऐसे बाहर आया, फिर अंदर आया, और ये ऐसे bursting सब बनाया, और जब इसको उसने टाइट किया तो it goes like that. Similarly on this side he will see कि उसने bursting किस इलाके तक करना है, ताकि when he will pull this one, मेरे ख्याल में वो यहाँ से डालेगा और यहाँ तक bursting करेगा, ताकि when he will pull this goes back to the other side. देखना ये he is checking कि यहाँ तक उसने bursting करना है. Reverse mounted just like the same, comes out. You will take both the tenon and conjunctiva with it. My videos में you could see taking tenon better. वो चल नहीं रही है, I apologize for that. तो ये देखें, ये अंदर से बाहर और फिर इसके बाद he will do bursting जहाँ तक लेके जाना है. ये देखें, he took the tenon with it. और जब वो खींचा तो it will close nicely. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं प्रोसीजर. ये बहुत बड़ी गलती है, because it may leak from here. So यहाँ पे you can put buried mattress sutures. ये देखें, you can take it over this releasable sutures. इसमें कोई मसला नहीं है. उनकी और depth है, इसकी और depth है. And he passed the needle from here, from the cornea, came out through, took the conj and the tenon together, and then he will tighten it. So ये एक block में यहाँ पे block suture लग गया. उसके बाद he will put others till it's absolutely necessary. चाहे आप 2 करें या 3 करें, लेकिन it's good कि जो अगला जब आप start करना है वो overlapping हो, ताकि leaks ना हो. Leak is your enemy. अगर आपके bleb leak करना शुरू हो गया, take my word, almost 100% chance कि आप fail हो. I'm sorry I can't show the other videos, लेकिन absolutely. And conjunctiva has the property to trim. Yeah. पीछे चला जाता है. Exact. And then आपका स्क्लियस नजर आता है. फिर तो बाहर आएगा. फिर बाहर बनेगा. आपके Center has to be anchored. anchored, absolutely. और overlapping आप sutures कर रहे हैं, तो क्या हुआ? सर ओपन करे हो सकता हो जाएगा. मैंने डिस्प्ले चेंज किया, पेपर लिंक जी. नहीं, आप निकाल सकते हैं. हाँ. हाँ. ये yes. This is a very fine point which Aisha has mentioned, and इसका रीज़न ये है कि every individual जो आपके पास आया different है, and on the day जब आपने surgery की है, आपकी जो flap creation है, that's a pure engineering concept. वो I'm sorry, मैं last time नहीं कर सका, time ख़त्म हो गया. तो that is based on engineering. हर दफ़ा आप एक ideal चीज़ नहीं बना सकते. तो पेशेंट डिफरेंट है, पेशेंट का हीलिंग रिस्पॉन्स डिफरेंट है, पेशेंट की आई ड्रॉप्स डिफरेंट है, उसने किस तरह फाइब्रोज करना है, वी डोंट नो. तो कुछ लोग हैं वो जल्दी फाइब्रोज करते हैं, एंड यू मे नीड टू रिमूव द सूचर वेरी अर्ली ऑन. तो जो इस तरह के हाई रिस्क पेशेंट हैं, उसमें आप 2 की जगह तीसरा भी आप यहाँ दरमियान में भी रिलीजेबल लगा सकती हैं और लगा लें. उसको आप पहले दूसरे दिन भी निकाल सकती हैं. अगर निकालें तो हमें पता है एटलीस्ट 2 तो है ना जिसने संभाला हुआ है. तो कुछ मेरे पास हमारी पॉपुलेशन में अब बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन होनी शुरू हो गई है, जहाँ पर आई वाज 98-99% वाइट, वहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा अबाउट 6-7% ब्लैक्स आने शुरू हो गए. ब्लैक्स एवरीवन नोज उनका ग्लोकोमा इज़ फार मोर अग्रेसिव देन एनी अदर जेनेटिक वेरिएशन इन ह्यूमन रेस. सो और एंड दे हील रियली रियली एग्रेसिवली, ज़बरदस्त हीलिंग होती है उनकी. लेकिन उनका भी ट्रैप की आउटकम इज़ एग्जैक्टली द सेम जो कि वाइट्स की है, क्योंकि these are the intricate points that we have to see. Blacks में I tend to remove suture early, जिस आयशा ने कहा कि ख़ास तौर पर अगर toxic conjunctiva तो you may have to remove it, but this is your clinical sense कि आपका. लेकिन whites में अगर मैं first week पे निकालूँ तो hypotony होने का बहुत ज़्यादा chance होता है. तो अब ये है कि we have 2 microscopes और we have models. तो पहले में मेरे ख्याल में तैयबा आप शुरू करेंगी, एंड सादिया आप कर लीजिए.
तो we will shuttle मैं और महर साहब और आयशा we will shuttle between जिसने एक सूचर एक दफ़ा लगा लिया है they can come back up here और फिर उसके बाद जो ज़मीनी टोटके हैं after the technique कि किसको किस तरह fine tune करना है we will tell you those two. So any questions from the audience? Just an observation. जी. A small leak even occur if you leave them for a few days, sometimes it leaves by itself. आपने कहा कि अगर there is a leakage is 100% chances of total. But sometimes if you leave for a few days, this leakage used to be okay. This, yes, heal देखें leaks depend है कि it's at the wound or is at the conjunctiva और conjunctiva में anterior है या posterior है. Posterior leaks are more forgiving and जो anterior leaks and especially the wound leak तो होता ही है कि because aqueous dynamics in this is a big topic. I think it's a good idea. I will do how does the aqueous egresses out against gravity with blinking and the kind of the aqueous which is coming out because not all glaucomas are same. अगर आपने क्या कहते हैं more pro-inflammatory aqueous हैं जैसे चाहे uveitis ना हो like let's say pseudoexfoliation है it's a pro-inflammatory glaucoma उनकी aqueous concentration of interleukins and prostaglandins is entirely different spectrum. अगर आपका open angle glaucoma का opening pressure was 30 instead of 40 or low pressure जिस पर low pressure पर तो हम करते ही trap हैं सिर्फ तो इन सब के aqueous profile different है. How these blebs behave, how these leaks behave is very different. तो हमारे हाथों में भी जब leaks होती हैं तो सुस्ती के वजह से बैंडेज कॉन्टेक्ट हम लगा देते हैं लेकिन हमें पता होता है कि भाई ये 2, 3, 4 महीने तक जाते जाते इसने ख़राब होना है. लेकिन अगर टेक्निकली पूछा जाए और अगर लॉजिस्टिक्स इजाज़त देते हो तो लीक्स को बेस्ट है कि आप जाके सूचर कर दें. लेकिन कुछ नहीं सूचर हो सकती है अगर कॉन्जंक्टिवा नैकेड है आपको पता है आप इसको हाथ लगाएंगे और लीक करना शुरू हो जाएगा उसमें आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें लेकिन आप यू शुड ऑलवेज रिमेन स्विच्ड ऑन कि दिस इज़ लाइकली टू फेल बिकॉज जब एक दफ़ा एक्वस अपनी जगह नहीं बनाता वो फिर फाइब्रोसिस होनी शुरू हो जाती है वहाँ पे. यू डोंट वांट टू मच ऑफ एक्वस वो भी फाइब्रोसिस करता है अगर यू डोंट वांट टू लिटिल एक्वस तो ये जो फाइन बैलेंस है ना वो ट्रैप में ख़राब हो जाता है. तो अगर आपकी एक्वस ईग्रेस बहुत ज़्यादा है बिफोर डूइंग द ट्रैप आपने जब ट्रैप की है उसमें रिलीजेबल सूचर्स नहीं थे या फिर उसमें आपने सूचर लाइसेंस नहीं की आपका कंट्रोल नहीं है तो दैट्स एन अनप्रेडिक्टेबल मेथड. अनप्रेडिक्टेबल मेथड में अगर तो आपकी आउटफ्लो ज़्यादा था एक्वस का और शुरू से हाइपोटनी थी और लीक भी थी तो प्रॉबली विद टाइम जब तक हील करेगा एवरीथिंग वुड बी फाइन. यू मे हैव अ वेरी गुड ब्लैब यू मे हैव प्रेशर्स ऑफ 8, 9 एंड बट बाय दैट टाइम ऑप्टिक नर्व तो ख़त्म हो गई ना. तो कोरोनल एफ्यूजन से इतना डर नहीं लगता जितना कि कॉर्नियल एडीमा से लगता है ऑप्टिक नर्व एडीमा से लगता है. एंड आई हैव शोन इन प्रीवियस समटाइम्स ऑप्टिक नर्व लुक्स परफेक्टली फाइन इन एडल्ट्स इन हाइपोटनी लेकिन अगर आप उसको प्री ट्रैप के साथ कंपेयर करें तो यू विल रियलाइज़ कि ये हाइपोटनी की वजह से जो आपको नॉर्मल लग रही है ऑप्टिक नर्व दैट्स एक्चुअली मूव फॉरवर्ड एक तो फिजिकल फैक्टर्स की वजह से और वो अगर फॉरवर्ड नहीं हुई तो हो सकता है स्वोलन हो उसका फंक्शन ना वापस आ रहा हो. इसलिए कोशिश तो यही होती है कि लीक्स ना हो लेकिन हो जाती हैं. वी आर ऑल ह्यूमन हम सबसे हो जाती हैं लेकिन जब हो जाए तो उसको आप बस अल्लाह पे नहीं छोड़नी वो खुद ही करना है.